Hello and welcome to another episode of the Misal podcast. My name is Zahid. I'm your host. Every episode, I explore Pakistan's startup economy with some of the smartest people building the digital future in Pakistan. Today, I'm joined by Nashit Iqbal, co-founder of OkayKer, a B2B2C startup digitalizing auto parts and services market in Pakistan. His first startup, Delivery Chacha, was acquired by Careem in 2017, where he then went on to work as an operations manager until he co-founded OkayKer in 2020. Nashit shares how he wants to disrupt the $5 billion auto parts and services market in Pakistan by digitalizing it, how he achieved product market fit, what are his fundraising plans, how he builds a team, and a lot more. Let's listen in. Welcome to the Misal podcast, Nashit. How are you? I'm good, Zahid. How are you doing? Well, I'm doing well. Thanks for joining me. Appreciate your time and look forward to learning about you and your startup. So let's get started. Can you please tell me a little bit about yourself and what problem are you trying to solve with OkayKer? Yeah, so just a little bit about introduction about myself. So I'm Nashit Iqbal. I graduated from LUMS in 2013 and I started my own startup by the name of Delivery Chacha in 2014. So we were the first on-demand delivery logistics company in Pakistan, and it was a time when there wasn't even 3G or 4G penetration back then. So you can understand the hassle that we used to send and dispatch orders via text messages and everything. The big break came when Etoy started giving orders to us, so we started doing deliveries for them. It was later acquired by Foodpanda, so we started doing deliveries for them. So the Foodpanda riders that you see in Pakistan right now, the initial foundation for all that was laid by Delivery Chacha back in 2014. And it was finally acquired by Careem in 2017. So when it was acquired by Careem in 2017, I joined Careem and I launched bikes for them in 13 cities across Pakistan. And I left Careem around about the time when the Uber acquisition happened. So after leaving Careem, I joined my family business, and my family business since the last 40 years has been primarily dealing in automotive spare parts. So in 2019, I joined that, and around the end of 2020, me and Hasnan, the other co-founder, started OkayKer with a vision to solve for the 32 million vehicle owners to solve for the repair and maintenance market for the 32 million vehicle owners in Pakistan by empowering the existing set of 100,000 workshops and retailers that exist in Pakistan, and by giving them tech-enabled products and by actually enabling them to earn extra income and increase the utilization that they have. So the problems that customers usually face when they go for repair and maintenance in a market is that it's a very time-consuming experience. So on average, a Pakistani consumer spends around 40 to 50 hours yearly on a workshop that he could have spent working, earning money, or even spent with his family as well. And there are almost more than 400 types of services that exist in Pakistan. So for example, and all these fall under 9 different categories, but majorly the services look like that. There's car spa category, in which you can get your car wash and everything done. There is mechanical services category, which is like maintaining your engine and maintaining the wheel bearing part of it. इसके बाद फिर सस्पेंशन की सर्विसेज आ जाती हैं, फिर रेडिएटर की अलग सर्विस है, एसी की अलग सर्विस है. तो इस तरीके से 9 कैटेगरीज आती हैं और there are more than 400 types of services, and none of the workshops does it under one roof except for the dealerships in Pakistan. So customer has to go to different workshops just to get his car repaired or her car repaired. And at the same time, there are more than 10 million SKUs available in the market. So there is very high price opacity, and they have to rely on the workshop's word to confirm the quality of the item, and even if that was installed in the car or not, because there is a very high fraud rate in Pakistan. I can quote you an example as well. That so, for example, even the Shell and the Haviline oil companies, even they have do number oil or the Nakli oil at their own franchises as well, and I've proven to them as well, and we are continuously working with them to make sure that the genuine products stay in the market, और वो 2 number और वो जो fake products हैं वो मार्केट से किसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके वेयर आउट हो. बट कस्टमर्स डोंट हैव एन आइडिया, एज इन नो वन कैन नो विद सीइंग कि यार कि ये ऑयल जेन्युइन है या फिर ये फिल्टर जेन्युइन है, until and unless you are expert in that.
As in, I have worked 3 years, and even I can't differentiate between a nakli oil filter and a genuine oil filter. The simple reason is that it's the copy is so accurate, and the markings are so accurate that you can't. The only way to do it is by enabling technology and by introducing QR codes and different kinds of mechanisms to make sure that these kind of things stop. At the same time, so we started doing this with our own fleet of gurus as well. सो हम लोगों ने गुरु से अपने मैकेनिक्स और अपने टेक्नीशियंस रख के काम करना स्टार्ट करा एंड वी रियलाइज्ड इन 6 months टाइम ओनली कि यार rather than competing against the workshops that exist in the system, why can't we just enable them, because we are facing the same kind of issues as well when we are working for the customers. So a workshop on average is severely underutilized in Pakistan. So they have been working, so the mechanic, the technician, the owner is working on the workshop in the workshop since the last 20 years now. He is 35 years old, so he has been working since the age of 15 and he has that kind of experience, but he is not educated enough, जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता. So majority workshops are 35 to 40% की बीच में उनकी यूटिलाइजेशन होती है, सही है. और उनका बिहेवियरल पैटर्न ये होता है कि दे ओपन अराउंड 11 to 12 PM एंड दे क्लोज डाउन एट 7. और कस्टमर को ये सामने से इशू आता है कि कस्टमर्स वर्क फ्रॉम 10 to 5 और 10 to 6 PM, सो वो काम कराने कब जाए एक्सेप्ट ऑन अ संडे. एंड संडे को 68% ऑफ द वर्कशॉप्स इन पाकिस्तान आर क्लोज. सो एक बिहेवियरल पैटर्न का एक बहुत बड़ा इशू है. प्लस द वर्कशॉप्स डोंट हैव एनी ERP और एनी डिजिटाइजेशन, सो दे डोंट हैव एनी डेबिट कार्ड या पेमेंट या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट इंटीग्रेशन. दे कांट गो टू अ कॉर्पोरेट एंड take their orders because they can't provide invoice to them, और corporates ने tax compliance करनी होती है. ये चीज़ें हैं. इसके अलावा as I told before that there are more than 10 million SKUs available in the market. तो होता ये कि how can a mechanic or how can a technician know which part to install? It's all in here. There's everything is on pen and paper. अगर आप बहुत अच्छी कोई workshop चले जाओगे तो you'll see 20-30 different types of catalogs of parts, लेकिन you won't still find a single PC और टेक सिस्टम और लैपटॉप जिसके ऊपर वो बस गाड़ी का चेजेस नंबर एंटर करे और वो इन्फॉर्मेशन निकल आए. सो वी आर बिल्डिंग दैट डिजिटल कैटलॉग एज वेल. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी वांट टू एड्रेस इन द पाकिस्तानी मार्केट, बिकॉज एंड इट्स एन इकोसिस्टम इशू. इट्स नॉट वन साइड ऑफ द प्रॉब्लम. इट्स नॉट ओनली कि कस्टमर्स के लिए मैं मसला हल करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू सॉल्व फॉर द वर्कशॉप्स एंड द रिटेलर्स सेगमेंट, and I'm building the technology for the ecosystem and not only for the customers. My Chacha actually has a store in Karachi. It's an auto store and they sell parts and like उनकी दुकान के आगे जो ना बच्चे होते हैं और मैकेनिक होते हैं और बाइक्स खड़ी होती हैं. अक्सर तो मैं कभी कभी जाना अगर हुआ, कभी बहुत टाइम पहले मैं गया था, तकरीबन 10-15 साल पहले, तो मुझे याद है कि जो चीज़ें जिनको याद होती है ना कहाँ पड़ी है, कहाँ से निकालनी है स्टोर के अंदर, वो यानी कि आप 10-15 मिनट भी अगर आप बैठे वहाँ पर तो आपका दिमाग ख़राब हो जाए कि ये कैसे रहा है काम. So for example, because you are from Pakistan, so when you were in Pakistan, which car were you driving? So car, so actually I never lived in Pakistan, so the car was not the thing that I would go around. So it was basically my Chacha who had a bike. So it was basically his bike. He would take us around. So I'll give you a very interesting example के the variation in parts. So in Pakistan, it's a known fact कि after 1998, all the Hondas in the world have the same oil filter. It doesn't matter if you have a 2000 Honda and it doesn't matter if you have a 2022 Honda. The same oil filter applies. But in Pakistan, if you go to a workshop and if you are going in a 2000 or 2010 car, he will quote you a different rate. And if you are going in a fresh car made in 2022, he'll give you a different rate. Right. So इस तरीके से पाकिस्तान में मार्केट ऑपरेट होती है, क्योंकि नॉर्मली एक वर्कशॉप से जितनों से हमने बात करी, जितना हमने सर्वे करा है, वर्कशॉप जो है ना वो दिन में सुबह सोच के ही आता है कि मुझे घर पे जो है ना 5 से 6 हज़ार रुपये लेके जाने हैं आज के दिन में, क्योंकि मैंने एक अपने गैस का बिल देना है 1500-2000 रुपये का, सही है, मैंने बच्चे की स्कूल की फ़ीस भरनी है 2000 रुपये और मैंने 2000 अपनी बीवी के हाथ में देने ताकि वो घर चलाए. वो इस तरीके से ऑपरेट करते हैं, सही है. एंड वॉट वी आर टेलिंग देम इज़ कि यार आपको काम पता है, आपका काम शुड बी द मेजर कोर थिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन. Leave everything to us. Say we'll bring you the customers. We'll manage your operations day in, day out. We'll source the parts for you so you don't have to close down your workshop for 3 hours and go to the central markets to procure them. And we are providing you with a digital catalog and a CRM solution, because there is no way for you to realize that 4 महीने पहले कौन सा मेरे पास कस्टमर आया था जिसका ऑयल चेंज ड्यू है, लेकिन our system can tell you कि ये कस्टमर को 4 महीने हो चुके हैं
and you have to call him again ताकि वो ऑयल चेंज करवाए and upsell it. तो ये चीज़ें हम लोग वर्कशॉप्स के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं. जो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेसेस के अंदर जो डिजिटाइजेशन आ चुकी है, that digitization is not prevalent in the automotive industry. So even my family business has an ERP, has been working on the tech since the last 20 years. लेकिन जो मेरे फैमिली बिजनेस जैसे बिजनेस हैं, they are, I can count them on my fingertips in Pakistan. So automotive industry के अंदर जिनको हम लोग मेरे फैमिली बिजनेस ज़्यादातर सेल भी करते हैं, even they are on pen and paper. तो every month my family is almost there is a circular जिसके अंदर वो सारे रेट्स लिखे हुए होते हैं. It's a 200-page circular और उसकी तकरीबन 2000 कॉपीज बनती है every single month and sent to them. When I was working in my family, I asked them कि यार कि ये चीज़ आप व्हाट्सएप पे क्यों नहीं भेज सकते, आपको प्रिंट करने की क्या ज़रूरत है, या फिर एक डॉक्यू सेंड क्यों नहीं कर देते जिसके अंदर वो बस लिंक खोल के बार बार सर्च करके देख सके, क्योंकि पेन एंड पेपर पे तो वो सर्च भी नहीं कर सकता, कम से कम वो PDF पे सर्च तो कर सकेगा. तो सामने से मुझे ये जवाब मिला था, यार मार्केट जो है ना वो इसके लिए रेडी नहीं है, मार्केट को करना ही नहीं है, वो उनको वो पेन एंड पेपर सामने फिजिकल चीज़ चाहिए ताकि वो देख सके. They are not ready for it. It's a very natural thing for you to go into this because you had experience working with, in a startup environment. You know, there are a lot of things that you can bring as someone who's started a startup previously and, then went on to work with Careem and, so you learned basically what it takes to run an operation like, the one that you're running right now. So I won't ask you like, why are you doing this? Because it's family angle is there, of course, as well as like you have such market expertise in terms of like you can pick their brains basically, you can go to your family and you can learn things that you don't understand. And basically you have to execute on your end and everything else will be taken care of in terms of the knowledge and, the experience part of it. So how did you meet your co-founder and how big is your team? Yeah, so just adding on to the last part. So I personally think that the onus to uplift Pakistan relies on the people who are in Careem or who have sold their startups or who have been in the system, because we all know for a fact that things can be disrupted, things can be changed of how they work, and efficiency can be brought in, and there can be an increase in our economy due to this. तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम सब कश्मकश में लगे हैं. इवन बाजार, दस्तगीर, all of them have Careem co-founders, even रिटेल हो सही. तो सबकी असल कोशिश यही है कि यार कि how to empower and uplift the marginal and the society in Pakistan. तो ये एक था. उसके अलावा when you asked me about कि how I met my co-founders, so I have 3 other co-founders. There is Anusha, there is Hasnain, and there is Ajit. So Ajit is the technical co-founder. He has around 12 years of experience. He also worked with me while I was trying to make the ERP more better for my existing family business. So I met him there for the first time around 5 years back. And he already was working on government projects and also a client from New Zealand. It's a tool like Asana. और वो उस पर काम अभी भी कर रहा है और उस वक्त भी कर रहा था. इसके बाद अनुषा एंड हसनैन, both of them are from the 2015 batch in LUMS. Both of them I met during LUMS. Anusha was in one of the society which I was at, and Hasnain was also in one of the trips that I was heading at one of the societies. तो पहली बार वहाँ पे मुलाकात हुई थी, लेकिन जो असल बात इनिशिएट हुई थी वो हुई थी when we were at Careem. So Hasnain and I were in the same team, and he was looking after the performance management side of it, and I was looking after the whole operations and everything. So वहाँ पर पहली बार बात स्टार्ट हुई थी, and initially बात ऐसे स्टार्ट हुई थी कि कुछ स्टार्टअप करना है और इम्पैक्ट लेकर आना है. तो before COVID happened, we bootstrapped a recycling business model. तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारी रिसर्च करी. वी बूटस्ट्रैप्ड इट फॉर 3 to 4 months, एंड देन वी रियलाइज्ड कि यार इट्स नॉट अ मार्केट दैट वी कैन एंटर इनटू जस्ट बिकॉज यूनिट इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा इशू है, प्लस एक माफिया का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है इन पाकिस्तान फॉर रिसाइकलिंग. सो वॉट एवर थिंग्स यू सी ऑन द रोड्स इन पाकिस्तान आर ऑल गार्बेज दैट कांट बी रिसाइकल्ड. उसके अलावा 90% ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड आर ऑलरेडी रिसाइकल्ड इन पाकिस्तान. वो माफिया ऑलरेडी रिसाइकल करती है और उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत 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 क्रेजी हैं. यू कांट मीट देम, you can't ask anyone you can't employ anyone in less than $1 an hour and ask them to $1 a day
and ask them to pick 12 kgs of trash that can be recycled. As in, that's kind of a thing जो हम लोग के ethics और हम लोग के morals पे नहीं बैठती और हम लोग उसके अलावा compete नहीं कर सकते. तो उसके बाद फिर हसनैन वाज वर्किंग एट दराज एट दैट टाइम. उसके बाद फिर हसनैन से वापस बात हुई एंड कोविड ऑल्सो हैपेंड. सो कोविड के दौरान मेरा फैमिली बिजनेस के ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस गॉट अ वेरी बिग हिट, लेकिन ऑटोमोटिव सेक्टर डिडंट. प्राइमरीली द ट्रेडिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स डिडंट. द रीज़न वॉज कि लोग नई गाड़ियाँ खरीदना बंद कर दी, लेकिन पीपल हैड टू मेंटेन द ओल्ड कार्स. And the same applies during right now during the financial crunch as well. So you can't think about buying a new car, but you can always go and maintain your old cars because you want to travel and you want to commute, right? So that's the time when Hasnain and I decided that this is a very golden market opportunity. The reason primarily being that there is enough sufficient margin that we can play around with, and at the same time we can also solve for the customer base and the workshop base. So, I mean, you touched on this a little bit, but can you tell me a little bit more about how big the market is in terms of like what are we looking at in terms of is there any competition that you can think of that you have right now within the same market, or someone who is doing the same thing but not maybe the way you are doing it? Is there anything else? About the total market first, there are 7 million four-wheelers in Pakistan. That's the target market that we have, and there are 25 million two-wheelers also. So the approximate market stands around at $5 billion in Pakistan. This calculation is primarily because an average car owner spends almost $500 a year during the so he spends $2,500 during the 5-year span because he also gets his tire change, he gets his suspension repaired, seat cover change होते हैं, ब्रेक्स चेंज होते हैं, साल में 4 बार ऑयल चेंज होती है. तो वो करके ऑन एवरेज a car owner spends around $500 a year, and a bike owner spends around $60 a year in Pakistan. तो इसके हिसाब से हमारी market is roughly around $5.5 billion, and it is only being served by around 95,000 to 100,000 informal workshops and 780 dealerships. So there is no direct competitor because nobody's solving for the ecosystem. So there is a very big player known as Parkfields. Everybody knows them, but they are solving for the reselling. They are solving for the parts marketplace. लेकिन how would I know as a customer कि मुझे गाड़ी में कौन सा part लगाना है? I am not an expert for it. So I can't just go directly and buy a part from Parkfields and tell कि यार यही part लगेगा. It's a good way to understand कि हाँ यार ये रेट है तो मुझे मैकेनिक जो है वो बेवकूफ़ ना बना सके, या फिर जिससे मैं पार्ट खरीदा हूँ मुझे बेवकूफ़ ना बना सके. लेकिन यू कांट डायरेक्टली परचेज पार्ट फ्रॉम देयर. सही है. येस, देयर आर वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू रेज अवेयरनेस. दे आर ऑल्सो रीसेलिंग इंश्योरेंसेज, दे आर ऑल्सो रीसेलिंग द व्हीकल. सो दे आर द बिग नेम. And there were many startups who started in this space, but majority of them were not solving the whole equation of the problem. They were only solving one part of it. So there was Mechanic Star, there was Mechanic for You, there was Auto Genie, there was AutoX, but all of them were solving for the customer and not solving for the workshops. And during our journey, we realized it after a year that it can't be done via our own fleet. You can't go and scale. You can't go and hire 5,000 or 10,000 gurus or mechanics or technicians. क्योंकि नॉर्थ स्टार तो हमारा यही है ना कि यार कि कराची से लेके खुंजराब तक, विच इज अराउंड 5100 किलोमीटर्स इन पाकिस्तान, एवरी 10 to 15 किलोमीटर्स देयर हैज टू बी एन OkayKer सपोर्टेड वर्कशॉप जिसके पास OkayKer का ERP हो. सही है, ताकि कस्टमर अगर रोड ट्रिप पे भी है या फिर अगर कस्टमर किसी भी शहर में, ही गेट्स द सेम लेवल ऑफ सर्विस, सेम लेवल ऑफ क्वालिटी एवरीवेयर इन पाकिस्तान. सही है. और दिस कैन ओनली बी डन व्हेन यू आर नॉट कंपीटिंग विद द वर्कशॉप्स बट यू आर एक्चुअली अपलिफ्टिंग देम. क्योंकि इट्स अ वेरी बड़ा, तो अगर मैं 1500 वर्कशॉप्स को नहीं बात कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी कैपेक्स हैवी इन्वेस्टमेंट देन. बट एट द सेम टाइम अगर मैं उनको टेक इनेबल करने की बात कर रहा हूँ तो इन्वेस्टमेंट साइज बहुत छोटा हो जाता है. सो दैट्स व्हाई दे weren't able to scale ever, and majority of them closed down. So as I said, there is no direct competition, but yes, there are players who are solving one side of the issue. But at the same time, if you see the top 7 most populated countries in the world, that is China, India, USA, Pakistan, Nigeria, all of them have a solution that we are proposing. So India has Go Mechanic. The MENAP region has Service My Car, My Sierra, and other startups as well. USA has Your Mechanic. Nigeria has Mako. So, and China has Tuhu. And in China and in India, they are
Indian company Go Mechanic is valued at more than $1 billion right now, and Tuhu is valued at more than $85 billion right now. So all the countries which have high concentration of cars and motorcycles, all of them have a startup who is working towards solving this issue, and they have been there since the last 7 to 10 years now. And they all are profitable with positive unit economics. Precedents हैं market के अंदर, लेकिन there is no one in Pakistan right now who is solving it. So that's the golden opportunity in Pakistan. So from what I understand, just to summarize what you said, you are basically going after the B2B market and you're empowering them, the businesses, to basically help the consumer. But at the same time, you will also have this, like you said, your North Star is basically having locations everywhere. So you would also have like a brand where basically the auto shop will say outside the the door, or maybe there will be a sign that says OkayKer is powered by OkayKer, so the consumer knows that they are in good hands basically. So we do have a customer app, and Okay. हम लोग जो है ना जो 32 मिलियन व्हीकल ओनर्स हैं ना, उसके लिए ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमारा सॉल्व करने का तरीका इज अ बिट डिफरेंट. So we are not saying that we are hiring our own technicians fleet or we are outsourcing our own technicians fleet. What we are saying is that we are enabling a workshop with tech. तो जो भी orders हमारे पास आते हैं, we just match it with the nearest workshop that the customer has. और वहाँ से फिर गुरु या मैकेनिक या टेक्नीशियन डिस्पैच होता है, सही है, टू सॉल्व फॉर द कार. सो हैं हम लोग एक B2C प्लेटफॉर्म, सही, ऑन अ फ्रंट एंड, ताकि कस्टमर्स हमें डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकता है, लेकिन on the back end we are solving it in a different way. Thanks for that clarification, because I was like a little bit confused, I guess. So thank you so much for No, clarifying. it's a question that many people ask us, because it does sound a bit complex and a bit complicated that what we are actually doing. Lekin we always pitch the idea that we are not only solving for one side of the equation. We want to solve for the whole ecosystem. क्योंकि उसके अलावा we can't be successful. We have realized that within the last 18 to 20 months of working, that's the only way of working and scaling right now. उसके अलावा फिर हाँ, दूसरा तरीका है कि आप अपने 600 वर्कशॉप्स खोलो, लेकिन बात ये ना कि फिर आप मार्केट डिसरप्ट करके आप लाइवलीहुड भी छीन रहे हो ऑफ अराउंड 500,000 फैमिलीज इन पाकिस्तान, सही है, और आप एक चीज़ जो ऑलरेडी है आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, आप यू आर री इन्वेंटिंग द व्हील. So that's what we were against. So we want to uplift those lives, and we want to create an impact there. So if you don't mind me asking, like, can you share some numbers in terms of like how long have you been like operating in a way that you have like orders coming in, and what does the traction look like? We have been live since the last 20 months, January 2021. We have processed more than 20,000 customer orders till date. We have served more than 1,000 workshops and retailers. We have sold more than 125,000 parts to them. We have a retention ratio of more than 30%, that if a customer is using us in month 1, 30% of those customers return back to us in the 4th month. And we have more than 200 vendors who we procure parts from, and we have served more than 15,000 car owners. So you are doing all this with like 4 team members, or do you have more team members? So we do have operations team member as well. So we have our model looks like this, that so I look after the fundraising and the finances and the finance part of it, and also the parts vertical of it. Anusha looks at the whole set of operations and sales and marketing. So, and there are resources under us both. So I have an accounts team जिसके साथ मैं operate कर रहा होता. I have a parts supply team जो कि काम कर रही होती है, but it's a very small team now. So we are a team of 18 people now. 4 of them are at workshops, ताकि वो QC और वो mechanism वगैरह सारी चीज़ें चेक कर सकें और workshops को train कर सकें. We have a small sales team जिसको आप कॉल करके ऑर्डर बुक करवा सकते हो, और यू कैन प्लेस योर ऑर्डर वाया कस्टमर ऐप, और यू कैन जस्ट कॉल अस टू गेट एनी सपोर्ट और इवन बुक अ डायग्नोसिस. एंड देयर इज एन आउटसोर्स मार्केटिंग टीम. वी हैवंट ब्रॉट दैट इन हाउस टिल येट, क्योंकि वी आर वेटिंग ऑन फंड रेजिंग, ताकि थोड़ा पैसा आ जाए तो फिर हम लोग बर्न कर सकें उस चीज़ पे. एंड दैट्स इट. एंड हसनैन लुक्स आफ्टर द डेटा एंड द स्ट्रेटेजी साइड ऑफ इट. तो वी आर अ वेरी स्मॉल टीम नाउ, लेकिन लुकिंग टू स्केल एज सून एज वी
get funds locked. Since you mentioned fundraising, let me ask you this. How is the process going? Like, are you in like the thick of it right now in terms of like, are you like, doing the pitches, and where do you stand in terms of fundraising? Like, are you going to raise it within the next couple of months? And how the process has been this year so far? Fundraising has been very, very difficult, to be very, very honest. It has been a very big challenge. Although we have been working from the time when we were hearing very good news that people are raising 40 million, people have raised 3 million, people have raised 10 million and whatnot. Again, at the same time, the investment industry, the VCs and the PEs are not that crazy about the automotive industry. They don't think it's sexy. It's boring for them. Yeah, to put it very frankly, yes, the optics doesn't sound that great. Although we have a positive unit economics, so yeah, most of the funded startups that we see, they don't. Like we do, as in we don't sell anything with a loss. We always make a profit on all our doings. हम लोग ऐसा नहीं है कि यार कि भाई कस्टमर की ज़िंदगी आसान करनी है तो मैं जिस चीज़ की कॉस्ट 1200 रुपये करती है वो मैं 200 रुपये की कर दूँ. आई एम नॉट वी आर नॉट इन दैट बोट. हमें पता है कि एक नीड है, कस्टमर जिस पैसों में काम करवाता है, आपने बस उसका एक्सपीरियंस बेहतर करना है, आपने वो चीज़ मुफ्त नहीं कर देनी है. सही है. तो इन चीज़ों की वजह से, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम वावा कार फर्स्ट शट डाउन. तो VCs are more skeptic towards this market, but they are failing to realize the opportunity that most of the startups don't have positive unit economics and they don't grow at a pace that we do. So right now, the way we are working, we'll be net profitable by the first quarter of 2023. Although we don't have that much funds to actually take our salaries. So the 4 team members that I told you about, we haven't drawn any salary in the last 20 months. So we have been living off our savings and living off our savings from the previous work, जिसके थ्रू हम लोग ये काम कर रहे हैं, क्योंकि we know for a fact and we trust in the business model. हमें पता है कि यार कि we have cracked the PMF and this can be scaled as big as anything else. तो why not do it? तो yes, fundraising थोड़ी difficult रही है. लेकिन हम लोगों ने उसके अलावा भी तब भी फंड रेज करा. सो वी रेज्ड फ्रॉम SOS3, वी रेज्ड फ्रॉम angels from Saudi, we raised from an angel from Tanzania, we also raised from an angel in Singapore, and they all have been very, very good to us. So it's all the angels and all the investors that we have found till now, we have been very lucky that they have been more like friends and more like, supporting hand rather than just telling us what not to do. So most of the investors that you get tell you that ये चीज़ें नहीं करनी है. लेकिन फॉर अस, हम लोग बहुत लकी थे इस केस में कि दे डिडंट स्टॉप अस एंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग और डूइंग एनीथिंग, एंड एट द सेम टाइम दे सपोर्टेड अस व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग एज वेल. जो फंड रेजिंग है वो मुश्किल रही है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग कभी कभार लकी भी हुए हैं. एंड वी आर स्टिल लुकिंग टू फंड रेज राइट नाउ. वी आर स्टिल एंगेज विद अ नंबर ऑफ VCs जिनके साथ हम लोग बात कर रहे हैं. उनके पास हमारा डेटा रूम शेयर्ड है. एंड जैसे अभी डिसरप्ट हुआ था अ वीक बैक, तो वहाँ पर बहुत सारे हम लोग को VCs मिले थे जिनको हम लोगों ने वापस से एक दफ़ा टिक बॉक्स करा कि यार येस वी आर स्टिल अलाइव, ऑल्दो वी आर नॉट स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन येस वी आर स्टिल अलाइव. वी आर डूइंग पार्टनरशिप्स विद अ नंबर ऑफ कंपनीज एज वेल, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारी कैक की जो कॉस्ट है वो हमारी जेब से ना जा रही हो, वो पार्टनरशिप्स के थ्रू जा रही हो. तो हम लोग इन चीज़ों के अंदर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं. और एट द सेम टाइम जैसे 9 to Disrupt के ऊपर मिला था, देयर वाज आल्सो GTEX इन दुबई 3 weeks बैक. देयर आर कॉन्फ्रेंसेज हैपनिंग इन सऊदी. देयर इज आल्सो ऑटो मैकेनिका नेक्स्ट मंथ के एंड पे इन दुबई. तो यू डू फाइंड पीपल एंड यू डू फाइंड ओल्ड स्कूल बिजनेसेस एज वेल हु आर नाउ लुकिंग टू इन्वेस्ट, क्योंकि स्टार्टअप की दुनिया इज राइट नाउ थोड़ा समझो कि थोड़ी सेक्सी साउंड करती है. तो जो सेठिया बिजनेसेस भी हैं और जो ओल्ड स्कूल बिजनेस भी हैं, दे आर ऑल्सो लुकिंग टू इन्वेस्ट नाउ. सो ये एक अच्छी चीज़ भी है जिसकी वजह से वी डू गेट स्मॉल टिकट साइज इन्वेस्टर्स, बट वी हैवंट बीन एबल टू लॉक अ वेरी बिग टिकट साइज इन्वेस्टर अप टिल नाउ. एंड द सेम गोज फॉर आवर प्रेसिडेंट्स एज वेल. तो हम लोगों ने गो मैकेनिक के फाउंडर से भी बात करी है, हम लोगों ने माई सियारा के फाउंडर से भी बात करी है, एंड दे ऑल सेड के दे वेंट थ्रू अ वेरी सिमिलर जर्नी एज वेल. क्योंकि लोग ये बात नहीं समझ पाते इनिशियली कि यार कि इट्स अ वेरी बिग मार्केट, इट्स अ वेरी लुक्रेटिव मार्केट, लेकिन इट्स अ स्लो स्केल मार्केट, क्योंकि अ कस्टमर इज नॉट readily willing to
hand you over his or her $25,000 asset. तो एक ट्रस्ट बिल्ड करने में इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, लेकिन वंस दैट ट्रस्ट इज बिल्ड, सो आर कस्टमर, जो हमारी कस्टमर की LTV इज अराउंड $350 एंड द कैक टू एक्वायर हिम इज लेस देन $10. सो लेकिन बात ये कि वो उसकी जो कन्वर्जन है, इट टेक्स अ बिट, द जर्नी फॉर हिम इज नॉट अ स्मॉल जर्नी कि मैंने कॉल करी और कस्टमर कन्वर्ट करा और हो गया. It's a bit lengthy journey compared to other consumer businesses. Fundraising, like right now in the current economic climate, also might be a little bit difficult. Like I think you have like all the ingredients that VCs are looking for. It might take some time. It might take some. So, are you like mostly going after the VCs that are outside Pakistan, or it doesn't matter to you? कुछ लोग हैं, कुछ VCs हैं जिनका हमें पता है कि मैंडेट नहीं है, तो वी डोंट रीच आउट टू देम डायरेक्टली. सही है, लेकिन उसके अलावा क्योंकि there aren't many. So for example, it helps you if you are fundraising for a very similar startup. So for example, when Dastagir was fundraising, सही है, तो दे हैड बाजार या रिटेलो जिसके अगेंस्ट वो कंपेयर कर रहे हो, या ताजर जिसके अगेंस्ट लोग कंपेयर कर रहे हो, जिसके अगेंस्ट VCs कंपेयर कर रहे हो. हमारे केस में ये कि देयर इज नो अदर स्टार्टअप जिसके अगेंस्ट VC हमें कंपेयर कर रहा हो, या फिर देयर इज on the optics are not that crazy, right? You can't compare a $100 billion market with a $5 billion market. इन चीज़ों की वजह से जो है ना वो थोड़ा इशू आता है, लेकिन yes, we are open to taking funds from anywhere that we can find. अगर वो एथिकली बंदा सही है, उसके ऊपर कोई रेड फ्लैग्स नहीं है, तो वी डोंट माइंड टेकिंग मनी फ्रॉम any VC. You mentioned $5 billion market, right? So I recently reached out to a VC with someone else's startup, and I told them like, this market is $250 million, and he laughed at me. He's like, we won't even look at that, and I'm like, acha. Like, I mean, I don't understand like how far are you guys going in terms of because for me in Pakistan, any startup or any market above $250 million, I would be like, this is great opportunity. Yeah, लेकिन यही ना, तो ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट इसलिए भी साउंड करता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की फार्मेसी मार्केट stands at less than a $4 billion market. I can tell you at least 10 different startups जो कि ये काम कर रही हैं. It's a smaller market than automotive. At the same time, पाकिस्तान की जो फैशन इंडस्ट्री की मार्केट है, इट्स लेस देन $2 billion. इन दैट सेगमेंट एज वेल आई कैन गिव यू नेम्स ऑफ 5 स्टार्टअप्स जो कि काम कर रहे हैं. सो यार हम लोगों ने जो हमें समझ आई बात वो ये होता है कि अगर किसी ने पैसे डालने हैं ना, तो ही डज, एंड इफ ही इज बोगस अबाउट द मार्केट, इफ ही लाइक्स द मार्केट, इफ ही लाइक्स यू, इफ ही लाइक्स द फाउंडर्स, सही, तो वो पैसे डाल देता है. ही डजंट केयर कि मार्केट कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, क्योंकि देर आर नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान जो कि पैसे रेस कर रहे हैं, जिसका आप बोलते हो यार कि इनको पैसों की रेस करने की क्या ज़रूरत है. 1 2 पैसे रेस कर कैसे रहे, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट ही नहीं है. लेकिन एज इन देर आर नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन द फिटनेस मार्केट एज वेल नाउ इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में लोगों के पास यहाँ पर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन आपने समझ रहा, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने आप अपने आप को कितने अच्छे तरीके से सेल कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ अ VC. सही है. सो कुछ VCs अगर ये बात सुन रहे होंगे तो आई माइट साउंड अ बिट नेगेटिव, लेकिन दैट इज हाउ जनरली द वर्ल्ड ऑपरेट्स, राइट? सो हाँ, so there is a book that I'm listening to since the last few days, Hard Things About Hard Things by Horowitz. So उसके अंदर वो पूरी जर्नी बताते कि यार कि how people inherently are not बुरे, लेकिन they have to take that hard decisions when you are on that stage. तो I can't blame any one of them, क्योंकि I understand कि where they are coming from, they have to also answer their LPs and they have to also answer their investors. लेकिन it all depends कि how well you click with the VC and how excited the VC is about that market and how much excitement you can create about that market via your pitch. So let's change topics a little bit. I want to ask you, like, you mentioned few things already, but let me ask you this. In terms of building your startup, right, were there any challenges that you faced that came from nowhere? Like, you were like not prepared for it, and how did you go about, solving that problem? The biggest challenge that we got initially was finding the right people for our startup. So पाकिस्तान में आपको पढ़े लिखे मैकेनिक्स बहुत बहुत कम मिलते हैं, एंड पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग जो कि वर्कशॉप चला रहे हो वो उससे भी कम मिलते हैं.
बट येस हम लोग को कुछ लोग मिले थे, जैसे देर वॉज जानजे, ही जस्ट वेंट टू स्टैनफोर्ड फॉर हिज मास्टर्स 2 days बैक. देयर इज ऑल्सो उस्मान हु वाज फ्रॉम IBA. ये लोग अपने अपने वर्कशॉप चला रहे थे एंड वी फाउंड देम एंड दे वर रियली एक्साइटेड अबाउट द थिंग्स दैट वी वर ट्राइंग टू डू. they they entered into the business and they were heading the service and the parts category for us. Also, the another challenge that we faced was कि जो मैकेनिक्स थे, अब हमारे काम, क्योंकि हम लोग इनिशियली मैकेनिक्स खुद ट्रेन कर रहे थे और खुद हम लोग वो काम करवा रहे थे, तो वो आप समझ सकते हो कि उनको अब मार्केट के अंदर there are different things for different names for different things. So for example, the A arms bush, सही है, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इज कॉल्ड कैंची बुश. अब वो चीज़ हमें नहीं पता थी, वो काम करके करके हम लोगों ने सीखी. सही, जैसे वो बोलते हैं ना प्लग शार्ट है, सही, वो स्पार्क प्लग की बात हो रही है, वो स्पार्क प्लग का नंबर बोलने का तरीका, वो पार्ट के आइटम को रिकग्नाइज करने का तरीका, कुप्पे, कमानियाँ, तो देर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जिसके अराउंड हम लोग सेट करा. तो इट वॉजेंट एन ओनली चैलेंज फॉर अस, लेकिन अगर हम लोग इफ व्हेन all the people that we were hiring at that time, even them, they didn't have that kind of an idea. So initially जब हम लोग startup start करें तो you have to look after the unit economics and everything as well. So you can't go out and hire 80,000 रुपए का सेल्स की रिसोर्स या 80,000 रुपए की जूनियर ऑप्स की रिसोर्स, राइट. सो when you go out and try to look for a cheaper alternative, you don't find that many great people जो उनको गाड़ी का भी आइडिया हो, क्योंकि हम लोग का काम तो स्पेसिफिकली गाड़ी और बाइक्स का ही है. सही, तो उनको वो चीज़ आइडिया नहीं होता. तो इट टुक अस एटलीस्ट 2 to 3 months इन द स्टार्ट जस्ट टू ट्रेन आवर सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ कि यार कि ये चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं. एंड वेन एवर अ न्यू एम्प्लॉय कम्स इन, ही डजंट डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट 15 days, ही जस्ट गोज थ्रू द ओरिएंटेशन, ताकि उसे समझ आ सके गाड़ी के अंदर क्या चीज़ क्या होती है, मैकेनिक्स किस तरीके से बात करते हैं, वर्कशॉप्स किस तरीके से बात करते हैं, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, हर किस गाड़ी में क्या क्या फ़र्क है, किस गाड़ी में कैटालिटिक क्लीनर नहीं है, किस गाड़ी में कैटालिटिक क्लीनर है. ऑल्दो वी हैव बिल्ट ऑल दैट इनटू आवर सिस्टम एज वेल दैट आवर सेल्स और ऑप्स का बंदा यूजेस, लेकिन वी ऑल्सो टेक देम थ्रू अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके अंदर वो सारी चीज़ें हम लोग उनको समझाते हैं. तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज. एंड हेड्स ऑफ टू जानजेब एंड उस्मान, जो मैंने पहले भी कहा कि दे वर द वंस हु इनिशिएटेड दैट ट्रेनिंग मॉड्यूल, क्योंकि वो अपने वर्कशॉप चला चुके थे, तो दे न्यू के काम कैसे होता है. सो दे वर द बेस्ट पीपल दैट वी कुड फाइंड, जिन्होंने हमारे लिए वो ट्रेनिंग बुक पूरे playbook बना के दी हमें. Let me ask you this. This is something like, lot of other people watch, the podcast and listen to it and all that. One question I keep getting asked again and again is like, can you please ask your founders that, is there anything in the market that you wish existed? Like, for example, if there was something that could help you with anything that you're doing while running your startup, and you could think of it as like, काश कोई ये काम कर रहा होता, तो is there anything like that you can talk about? मैं तो चाह रहा हूँ काश कोई OkayKer जैसा काम कर रहा होता किसी और डिफरेंट ब्रांड नेम के अंदर, क्योंकि देखें यार, सो फॉर एग्जांपल जब ईटो स्टार्ट हुआ ना, सही, तो उसके पास फूड पांडा था जिसके अगेंस्ट वो अपना वो कंपेयर कर रहा था. जब करीम स्टार्ट हुआ उसके पास ऊबर था जिसके अगेंस्ट हम लोग देखते थे, राइट. ऐसे ही जब आपके पास कंपेरेटर होता है ना, तो आप, इट्स नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग. येस, कंपेरेटर डज टेक योर मार्केट शेयर, लेकिन जब मार्केट इज नॉट डेवलप्ड येट, यू आर, तो अगर वो स्पेंड कर रहे हैं मार्केटिंग के ऊपर, या मैं स्पेंड कर रहा हूँ मार्केटिंग के ऊपर, वी आर ओनली एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स एंड नॉट ईटिंग आउट ऑफ ईच अदर्स पाई. सो आई रियली विश के और स्टार्टअप्स होते जो कि ये काम कर रहे होते, सही है. और आई रियली विश के काश जो हमारे रिटेलर्स हैं या हमारे होलसेलर्स हैं उनके पास ऑलरेडी एक ERP सिस्टम होता, सही है, ताकि हम लोग अपनी प्रोक्योरमेंट का पार्ट और बेहतर कर सकते हैं, सही. क्योंकि हम लोग जब ये काम कर रहे थे तो वी हैड टू गो डाउन देयर एंड मेक द सोर्सिंग प्लेटफॉर्म. अगर वो ऑलरेडी चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती तो फिर हम लोग को वो रीइन्वेंट नहीं करना पड़ता, राइट. सो इट डिड, और वो टाइम कंज्यूमिंग एक्सपीरियंस होता है, टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज होती है. अगर वो चीज़ नहीं होती तो फिर हम लोग फोकस और चीज़ों पे भी कर रहे होते. सो आई रियली विश ऑफ टू थिंग्स के यार, एक कि मार्केट इतनी अंडर डेवलप नहीं होती कि कुछ तो डिजिटाइजेशन होती, कम से कम हर चीज़ पेन पेपर पे नहीं हो रही होती. एंड द सेकेंड इज के आई विश देयर वर मोर स्टार्टअप्स हु वर सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम, सो दैट द यूनिवर्स कुड हैव बीन एक्सपेंडेड मोर रैपिडली. क्योंकि अभी कस्टमर इज नॉट
कस्टमर्स को है ना एक कन्विंस करना पड़ता है, पिच करना पड़ता है कि यार कि ये सारे काम आपके डोर स्टेप पे हो सकते हैं. बहुत सारे कस्टमर्स को वो ख्वारी करना पसंद है कि उसको 45 आवर्स वो वर्कशॉप में स्पेंड करना है और वो उसको वर्कशॉप के ओनर से बातें करनी है. सो यूट्यूब पे देयर इज अ पेज कॉल्ड वाईमैन, WHYMAN. वो फनी वीडियोस बनाता है विद स्की मास्क ऑन हिज फेस, 2 holes फॉर हिज आइज, और शक्ल नहीं दिखती बंदे की. आई हैव मेट हिम एज वेल. तो उसने 2 वीडियोस बनाई थी कि when you go to a mechanic what problems do you face. So I would share the links to you separately. वो आप देखना तो आपको आइडिया होगा कि हाउ द मार्केट ऑपरेट्स एंड हाउ दिस मार्केट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि यार कि आपको समझ आता है कि यार, और बहुत सिमिलर होगा इन इंडिया, बहुत सिमिलर होगा इन बांग्लादेश, क्योंकि हम लोगों ने एंजल्स वगैरह से भी अपनी बात करी है. दे ऑल एग्री कि यार कि या दिस इज़ द इशू. वो बोलते हैं कि यार हम तो अपना ड्राइवर भेज देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा ड्राइवर हमें जो है ओवरचार्ज कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी तो कच्ची पर्ची लेकर आता है. So the number of things that you talked about, to summarize, basically is like there's nothing wrong with competition because it's not a zero sum game. It's basically increasing the pie for everyone. So it's not about zero sum, and if it would really help if these shops were already digitized in some manner or form, or had some ERP or something going on in terms of records, digital records and all that. So that's really great. So I know you talked about the North Star metric in passing, but can you tell me a little bit more, like let's just say 3-4 months, inshallah you have your funding and everything. So what are we looking at in the next 3 to 4 years, 5 years? Where are you going next? Yeah, so initially our first short-term goal is to make sure that we expand rapidly and we have a OkayKer supported workshop in every city of Pakistan. So अगर आप मुझसे पूछो कि यार कि 5 to 7 years में एक चीज़ क्या होगी, so we'll have more than 1500 workshops in Pakistan, inshallah, if we do get the fundraising. सही है. उसके अलावा once you start scaling, there are a number of products that you can venture into. So in Pakistan, there is no comprehensive insurance provider for motor vehicles. As in, आप एक दफ़ा इंश्योरेंस में पाकिस्तान के अंदर वो सिर्फ वो चीज़ें कवर करता है जो एक्सीडेंट के अंदर कवर होती हैं. तो अगर आपकी गाड़ी के अंदर डेंट पेंट है तो वो कवर होता है. सही है. आपकी गाड़ी का अगर टायर बस्ट हो जाए तो वो कवर नहीं होता. आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस या ऑयल चेंजेस कवर नहीं होती. ऑल्दो ग्लोबली अब वो कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंसेज होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पीपल स्टिल only go for the normal dent paint or accidental insurance. सही है. तो we'll also venture into the insurance segment. सही है, क्योंकि once we have those services that we are providing, सही है, तो it directly complements के यार कि आप कस्टमर्स को हुक करने के लिए आप इंश्योरेंस भी लॉन्च करोगे अपना. प्लस वी आर ऑल्सो इन कॉन्वर्जेशन विद ओरका. वो एक ऐप बना रहे हैं जिसके अंदर ECU के साथ आप, तो एवरी कार प्रोड्यूस्ड आफ्टर 1998 ग्लोबली हैज अ ECU मॉड्यूलेटर. सो वी वांट टू बिल्ड पाकिस्तान्स फर्स्ट Fitbit kind of technology for cars, so that customers are more engaged and more informed about what their car is going through and what when the next maintenance is due and everything. So there are a number of verticals that we will venture into once we start hitting our scaling वाली चीज़. लेकिन right now the short term goal is to make sure that every 15 kilometers we have a OkayKer supported workshop and the first AAA service in Pakistan. Well, this was really interesting talking to you and learning so much about the auto industry and everything. Really thanks to you, because it shows a lot of effort, since you told me before the podcast started that you are in US and it's what 1 a.m. now there, and it's close, and we started the podcast around midnight. So it shows a lot of effort and a lot of love for the Pakistani ecosystem. Thanks to you as well. Thank you for the kind words and thanks for being on the Misal podcast. Thank you. Thanks for listening to the Misal podcast. I hope you enjoyed the podcast and will thank me by writing a review or sharing it on social media. Make sure you follow and subscribe so you don't miss the next episode. Thanks again. See you soon.